Divisional administration. So divisional administration is the purpose of administration convenient state and divided into division consist of 4 or 6 districts. ठीक है. So divisional commissioner is the head of the division. He acts as a supervisory and the functional officer of the occupy position in the hierarchical between the district collector and the state secretariat. तो इसकी जो हायरार्किकल पोजीशन होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्टेट सेक्रेटरीट के बीच की होती है. ठीक है. एंड डिविजनल कमिश्नर रिप्रेजेंट द स्टेट एंड एज अ डिवीज़न ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ही इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस. ये भी एक IAS ऑफिसर ही होते हैं. द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिविजनल कमिश्नर फर्स्ट क्रिएटेड बंगाल. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको क्रिएट किया था एंड इट एग्जिस्ट तमिलनाडु, राजस्थान. इन दिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्टली डील विद द स्टेट सेक्रेटरीट विदाउट एन इंटरमीडिएट. फंक्शन क्या होता है? डिविजनल कमीशन इज द हेड ऑफ द डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिवीजन नॉट सब्जेक्ट टू हिज कंट्रोल बट हिज जुरिडिक्शन एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द revenue, law, order and well development also. So he is a highest executive authority. He supervise, guide, control various offices of the division, especially that collector, chief executive officer of Jilla Parishad and superintendent of the police. He is the head of the revenue administration and he hears the appeals against the order of the district collector. He is the chief coordinator of the charges of the various organization, ensure proper effective implementation of the various developmental schemes. He settle the interdepartmental differences and disputes. He is the head of the law and order and administration of. He is responsible for maintenance fees and jail जो भी है. his approval is needed for grant certain types of the licenses. He undertakes periodically inspect the district subdivision and tehsil. He deal with the land reforms, settlements, takavi laws also. Okay. And he is a integrity of the government official. He ensure these behave properly and with the public and or he deal with the whole crisis emergency situations, issue of the necessary orders. He supervise the functioning of the Panchayati Raj. So meaning many executive departments of the state government have the regional office. The jurisdiction of the regional office extend a number of the district ranging. So thus regional office intermediate level of the administration set up between state and the district. Regional officers is the head of the regional office and the example of regional office Deputy Inspector General of the Police. तो DIG को हम रीजनल ऑफिसर्स बोल सकते हैं. वो हेड द रेंज ऑफ द ऑफिस ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. सो कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट वो हेड ए रेंज ऑफिस एंड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स होते हैं. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं. द अदर एग्जाम्पल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. रीजनल ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेयर टू द डिविजनल कमिश्नर बट the jurisdiction of the regional officer on the other hand is limited activities but notably territorial jurisdiction जो होती है various executive departments की होती है यहाँ पे. तो यहाँ पे function क्या करते हैं? ये supervise करते हैं जो control work of the district level office, relieve the head of the department part of his work. This would enable him to concentrate on more important matters, to provide the technical guidance to district, to coordinate the work and the district level में facilitate करते हैं, implement करते हैं policies, act as the evaluating agency of the measuring the achievement targets, undertake the adequate number of the tours and maintain the active touch with the working panchayat and send the consolidated report to the head of the department. ठीक है. So this is the work of the regional director officer. अब है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पता है कि सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट सेक्रेटरीट, फिर डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट. तो स्टेट में तो आते हैं हमारे CM, फिर चीफ सेक्रेटरी, फिर डिवीज़न में डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो नोन एज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कर्नाटका, असम, पंजाब एंड now district collector in West Bengal and Uttar Pradesh. The office of district collector is called the collectorate. District collector is the head of the district and official agent of the state government. Office of the district collector unique and it has no parallel in the administrative system but इसको प्रीफेट बोलते हैं. कहाँ पर? फ्रांस में इसको प्रीफेट बोला जाता है. एंड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूनिक एज इट हैज़ नो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम except the prefect of France. In France, the prefect is head of the department as the largest territorial unit and then the official agent of the central government. The office of prefect is called the prefectorate. इसी को ही हम prefectorate भी बोल देते हैं.
So hence the French prefect is considered the nearest analogous to the district collector. The revenue and general administration department and the registration department of the district are directly under the district collector. Control, supervision, influencing all the departments. He is multi-purpose functionary. The district collector belongs to general administration department, state government, which is headed by the chief minister and administered by the chief secretariat. The collectors control and supervise the divisional commissioner. The place of collector administration system state can be listed by the following diagram. District is the basic geographical unit, and this dictionary is the territorial markup for the special administrative purpose. So Constitution of India made this district to Article 233, which is mentioned the term as a district judges, 73rd and the 74th amendment, and now included the part 9 and 9A, which is deal with the panchayat district administration towards the Khera total management of the public affair. District administration is the public administration. It is territorial unit which is the beginning of the Mauryan era and Mughal era, so called the Sarkar, and it was the Karoli Faujdar, okay, in that era. So the present day under the functions of the Subedar. So the present day district administration is the district collector. ये 1772 में वॉरेन हेस्टिंग इसको टर्म को लाए थे. देन 87 में कलेक्टर वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल जस्टिस एंड मजिस्ट्रेशियल पावर भी इसको दे दी गई. ही वॉज वेरी पावरफुल. वी कैन से इट इज़ अ लिटिल नेपोलियन. In Indian Statutory Commission, Simon Commission remarked the district collector is the eye of most of the inhabitant, the government, while the Ramsay MacDonald compared the district collector as a tortoise. तो Ramsay MacDonald ने इसको क्या कहा था? It is a tortoise to the wall back of the elephant of the government of India. Lord Wavell said English would be remembered not by this institution but by ideal left. So after independence of the district collector suffered in terms of the status, expansion and spread of the government activities due to the replacement of the police state to the welfare state, change the form of the government, adoption of parliamentary government, change the ends objective of the government and the welfare orientation, the emergence of panchayat, local government, separation of judiciary from executive, increasing political consciousness, the emergence of growth of large number of departments, replacement of IAS, role of the pressure group and the rise of commissionerate system of the law. So रोल क्या है? एक तो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू कलेक्ट द रेवेन्यू, कलेक्ट अदर गवर्नमेंट ड्यूज, डिस्ट्रीब्यूट द तकावी लोन, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स, रूरल स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज द पावर ऑफ लैंड एक्विजिशंस. ठीक है, तो कलेक्टर का रोल जो है दिस इज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन द रेवेन्यूज एंड इन द महाराष्ट्र गुजरात फाइनेंशियल कमिश्नर भी बनाए गए हैं टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म एंड टू लुक आफ्टर the welfare, to assess the losses of the crop, to supervise the treasury, stamp act and the rehabilitation, revenue appeals and जमींदारी. Now law and order को maintain करना. So as an executive magistrate he was responsible maintaining law and order, and he was responsible for trial criminal and civil cases, interpreting the law. After independent judiciary has been separated, and Article 50 of the Directed Principle of State Policy. Consequently, the role of collector as a judicial magistrate ended, and now called a district judge, whose work under the direct control of the state high court. The district collector is the capacity of the district magistrate, ultimately responsible maintaining law and order. For this purpose, the district police force headed by the district superintendent of police kept under the control, and the Indian Police Act vests the police administration district superintendent of police under the control of district. There is a system of the dual control of the law and order in district that is controlled by the district magistrate. Okay, so to control, supervise the magistrate to issue the orders for when there is a threat of the peace and order, section 44, to dispose all the petition for the government, to release the prisoner, inspect jail, submit the annual criminal reports, grant suspend, to grant superior classes, to supervise the control local body, to control direct action, enforce the tax act, all armed forces, prosecutes and order disposal of the unclaimed property, and scheme for the development forest. Development administration में police state concerned mainly with the regulatory administration. After independence, with the initiation of development planning, collector becomes significant. He has a pivotal figure in the implementation of the development program. So the position of this regard was not same as the state, but and the Tamil Nadu, Rajasthan, every year different kind of
position. In the first pattern of collector is responsible for regulatory and development function, as a look the revenue magistrate and development activities and implementation of the program, guidance, leadership. Even though technical matters they function under the control of the department's actual implementation of the program. District Development Officer is authorized to write the annual confidential report. In second patterns, the Maharashtra and Gujarat Development Administration as a Jilla Parishad, all the district level engage with the implementation of the program. For this, Jilla Parishad are appointed the District Development Officer by the IAS. Okay, important dimensions होते हैं कलेक्टर के, DRDA के 73rd अमेंडमेंट भी दिया गया. अदर है, he act as a Chief Returning Officer, he act as a District Census Officer, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स बनाता है, एक्ट एज ए ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एक्ट एज ए काइंड ऑफ बफर बिटवीन सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्ट एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचुरल कैलामिटीज, एक्ट एज ए पर्सनल मैटर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल सप्लाई एंड द फूड, हैंडल द वर्क pertaining civil defense, maintain the liaison between military authorities and act as a grievance addressal officer, and he make the management arrangement for the training of the different classes of probationers, and he facilitate the interaction of civil society and district level. Executive head of the district collector as chief coordinator, most important role as a coordinate the activities. So अकाउंट सेक्शन आ जाता है इसके अंडर में, सिविल सप्लाई, डेवलपमेंट, इलेक्शन, इस्टेब्लिशिंग, जनरल हाउसिंग एंड इंटेलिजेंस सेक्शन, रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सारा कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है. तो जो पुलिस है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा हेड होता है, जबकि जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करता है. इसके अलावा जुडिशियल, लैंड के रिलेटेड मैटर्स, पब्लिक रिलेशन, रिहेबिलिटेशन, स्टेटिकल एंड ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़, ये सब. अनिल कुमार लखीना ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंट्रोड्यूस द सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल एटीट्यूडनल रिफॉर्म्स एंड दिस इज़ नोन द लखीना एक्सपेरिमेंट. नाउ अदर है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट हैज़ own head of the district, so the born on the cadre of the specialized services. However, district collector is the head of the district administration, supervise, coordinate, unlike this collector is a journalist होता है ये, ठीक है. तो इसके पास बहुत से काम होते हैं, जैसे कि वी कैन से दैट डिस्ट्रिक्ट है, फिर सब डिवीज़न, तहसील, सर्कल, विलेज. तो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, सब डिवीज़न में सब डिविजनल ऑफिसर, तहसील में तहसीलदार, सर्कल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, विलेज में पटवारी. तो ऐसे ही इसके जो वर्क हैं वो एक्साइज, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, फॉरेस्ट, एजुकेशन, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जुडिशल, सोशल वेलफेयर, जेल, लेबर, पब्लिक वर्क, सिविल सप्लाई, वेटरनरी, इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, पंचायत, ये सारे के सारे इनके फंक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट में. नाउ सब डिविजन्स भी होते हैं. सो सब डिवीज़न अंडर प्रोविजन ऑफ द लैंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द units, purpose, revenue and criminal administration. The name of these units are the heads of the office. Now उत्तर प्रदेश में सब डिवीज़न है, तमिलनाडु में रेवेन्यू डिवीज़न है और महाराष्ट्र में प्रांत बनाए गए हैं, ठीक है. सब डिविजनल ऑफिसर इज either IAS, स्टेट सिविल सर्विस एंड इज अपॉइंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. लाइक द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज टेरिटोरियल ऑफिस ऑफ द जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. He is vested with the revenue, magisterial and executive power. As a chief executive officer, he has a keep touch with the activities all departments, and he act as a link between district collector and tehsildar, and district magistrate as a state police officers, and it is principal assess the valuable field of the district collector. Responsible subdivisional of two type, the office type and the touring. First type was the SDO, that is permanent office. In second type there was SDO not maintained. So तहसील में ईच सब डिवीज़न फर्दर टेरिटोरियल डिवाइडेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन नॉमेनक्लेचर इन द यूनिट, and that is from state to state mention. A tehsil is basic unit for the various aspect of the revenue and land treasury. It's a miniature district as a office of various field departments जितने भी होते हैं वो आते हैं यहाँ पे. तहसीलदार belongs to the state civil service and SDO भी होता है यहाँ पे. His territorial officers and the generalist administration, multi-purpose functionary, magistrate, executive and revenue powers responsible for collection of the revenue, maintaining the law and order in the tehsil, and chief executive officers भी होता है ये. So keep touch with the activities of various department and coordinate also.
सर्कल में each तहसील have divided into the number of the revenue administration that is called as circle. State of state. So कानून गो जो होता है that is inspectors regard to the first line supervisor. रिकॉर्ड्स ऑफ द होल विलेज. विलेज में लोवेस्ट यूनिट होती है जो कि फिजिकल पर्पस के लिए. तमिलनाडु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द विलेज. विलेज हेडमैन ही परफॉर्म द रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. द फंक्शन इक्वल टू द महाराष्ट्र एंड पटवारी जो होता है दैट वाज इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश एंड ही इज़ दस विलेज अकाउंटेंट होता है. लेखपाल इन द यूपी एंड करनाम इन द तमिलनाडु. नाउ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर. इट इज़ Next is the Rural Development Authority. District Rural Development Agency, principal organ for the district level to manage oversee implementation of the anti-poverty program. Union Ministry of Rural Development. 1980 में DRDA is met by the setting up the certain percentage of the allocation form programs and view the needs of the effective agency. Strengthening this scheme was administration. It has been brought the umbrella of National Rural Livelihood Mission. Primary objective is the administration to strengthen the DRDA so that they are able to effectively enhance the quality implementation and the poverty program and expected to coordinate effectively and financial institution non-governmental organizations are gathered support for resources. Role was facilitate implementation of the program, receive the progress, maintain the accounts. Okay, now next one is what? ऑर्गेनाइजेशन. हर एक डिस्ट्रिक्ट में DRDA बनाया गया है. इन द रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बीन मर्ज द जिला परिषद टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स एंड जिला परिषद वुड बी द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द DRDA. सो द स्टाफिंग स्ट्रक्चर ऑफ DRDA इंक्लूड द पोजीशन ऑफ द प्लानिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विंग, वुमेन विंग, वेज एम्प्लॉयमेंट, वाटर shed wing, engineering wing, account wing, monitoring and general administration. DRDA would not have any permanent staff but not resort direct recruitment. The employee should be taken on the reputation for the specific period. The post of project director, project officer, assistant project officer and all the technical should be manned by the officers. Capacity and motivation for the objective managed selection committee. So this is all about the district related matters.